Okay, so in the external hyperlinks, what will be happen? Whenever you click on the link, it will be open the other web page or the other web link. वो दूसरा वेब पेज ओपन करेगा या फिर दूसरी वेब लिंक ओपन करेगा. प्लीज म्यूट योरसेल्फ. But what happen in the internal links? In the external links, you can see that it will be open externally web page. External means कि बाहर. And what is the meaning of the internal? Internal मतलब कि वही वेब पेज पे होना. सेम आप जो वेब पेज होगा वो एक लिंक होगी, बस वही पेज पे आपको ओपन करके देगा. That's it. Next, let's learn the internal hyperlinks. It links to another section in the same web page. This is the syntax of the internal hyperlink. It's look like a same. वो उसके तरह ही दिखेगा, लेकिन उसकी जो सिंटेक्स होगी वो थोड़ी सी चेंज होगी. दो हमें ए टैग का यूज करने पड़ेगा. सिंपली हम एक्सटर्नल हाइपरलिंक में ओनली वन ए टैग मीन्स एंकर टैग का यूज करते थे, बट इंटरनल के लिए हमें दो ए टैग मीन्स एंकर टैग का यूज करना पड़ेगा. फुल फॉर्म ऑफ ए टैग इज द एंकर टैग. So this is the simple. You can see that in the external we are using that href, but in place of that, first you have to take the href, but in the second one you have to take the name attribute. First attribute is the href of the a tag, and second attribute is the name tag. So let's take an example. It will be only understandable by the practical. Okay, simply there will be, I made a simple document, a simple Notepad++ document of the HTML. Now I will show you the simple thing. We are using the a tag href. But here you have to write down the name of the section. First section, second section, third section, fourth section. And remember one thing, whenever you are writing the name of the section, no need to do the space between that. आपको space नहीं करना है. अगर आप space करते हो तो वो दूसरा तरफ ले जाएगा, वो नाम consider नहीं होगा. That will be a not a same name. And second thing you have to be remember, whenever you are writing the name, whenever you are writing the section name, compulsory you have to write down the hash. This is called the hash. अगर आपने hash नहीं लिखा तो वो section को consider नहीं करेगा. Compulsory you have to be write down the hash. For example, I am writing here the section A. This is the section A. Then you have to write down the simple the section A. This will be the text will be displayed for the hyperlink, and you have to close the A here. You have to done here. ये आपने A tag का यूज कर दिया, बट अभी आपको क्या करना है, सिंपली ये सेक्शन किसके लिए है, ये हैश आपने क्यों लिया. हैश का मतलब वो एक एट्रीब्यूट है, वो उसके अंदर भी आपको कुछ इंफॉर्मेशन दे रहा है. So now we are going to declare what is the section. So first of all, again second time you have to use the A tag for the above section. A, then use the names attribute equals to name is the section A. For the above section, whenever you are using the href, the section color will be red. For the name attribute, section color will be yellow. अगर ये color नहीं आता तो आपका wrong है. For the Notepad++, I am talking about only the Notepad++. Then you have to close the A tag. After that, you have to be write down what are you doing that. Yes, Prakruti? Ma'am, after href is equal to, you are telling that is known as hash. We will not tell it hashtag. Sorry? Can you repeat it again? After href, I am using the hash. What about that? Ma'am, we will tell it hash, not hashtag. Yes, you have to only tell only hash, not tag. Okay, then.
Simply I am write down the section 8. Heading is the section A and close. Please mute yourself after you are asking your question. Ma'am, H3 and yes, ma'am, what is H3? H3 is the heading tag. There are 6 Okay, ma'am. heading tags are there. The third heading tag is if you want to use the other heading tag you can. अगर आपको दूसरा heading tag use करना हो तो आप कर सकते हो. That's it. Ma'am, how many? Simply I am writing about this section. This is the simple demo section to show a practical. That's it. If you want to use here the P tag, then you can also. Otherwise, it will be directly displayed to you. Okay, now body tag close, head closed, title close, HTML also close. I'm saving it and show you the output. Okay, so this is the internal hyperlinks. You can see that will be considered as the hyperlink, but it will also see the text to you. But there will be a small text, that's why you can see that. I'm just searching about the other things, about the section, if there will be a long paragraph on that. So, due to network issue, it will be take a time. Kawita Tejas to Kasama, Jana Ketan Border, Jana Okay, simply I'm just copying it. Just going to the notepad and in place of this, again taking also that and paste it also. Same thing I will be paste here and taking other A tag. Remember that if you are taking the second section, then you have to be write down here at the below of the first section. B. Here is also section B. This is the section A. Third section I am taking. We are talking about the 3 sections here. This will be a first section. Now we are going to take a second section. Just copying this thing again. Just changing the name. What you have to do in the second section, just copy the first href tag, paste, in place of href, write down the name and remove the hashtag. Hash only, yes. Ma'am, your voice is cutting. There will be, and again, I'm using the h3 tag to write down the section B and about it. Save and something about for the H3. Sorry, this one. I'm just copying the random text. Please mute yourself, Yashvi. That will be a second. Now about the third section. I'm just copying this one again for the third section and you can see the output for that. Section C. Here I will change the names as a section C and taking out some of the text down here.
Okay, you can see that there will be a lots of text here. I'm saving it and show you the output. Everything will be in front of you, but whenever you click on that, it will be highlight and goes to that section. वो डायरेक्टली उसी सेक्शन पे आपको ले जाएगा जहाँ पे आप जिस टेक्स्ट पे आप क्लिक करोगे. अगर आप क्लिक करते हो सेक्शन ए पे तो सेक्शन ए आपको दिखाएगा. इफ यू क्लिक ऑन द सेक्शन सी, सो इट विल बी गोज टू डायरेक्ट टू द सेक्शन सी. मीन्स इंटरनली वो कहाँ पे है पूरे वेब पेज में, ये तो थोड़ा सा ही टेक्स्ट है जिसकी वजह से आपको इजीली मिल जाता है. Right, but whenever you are using the lots of the text in your web page, then it's difficult to find out the things. That's why we are using. नहीं आ रही. मैम समझ नहीं आ रहा. We are clicking on that. For example, listen to me. You have to look here. आप यहाँ पे देखोगे उसका जो link है, उसके जो पार्ट है, आप पहले वहां पे देखोगे. सिंपली दैट विल बी सेक्शन बी जस्ट बिकॉज आई एम क्लिकिंग ऑन द सेक्शन बी. फॉर एग्जांपल आई एम क्लिक ऑन द सेक्शन सी, so it will be goes down and show you the section C, and here you can see also the changes to the section C. For example, you are clicking on the section A, so it will be converted to the section A. I will show you the more text. मैं वापस से थोड़ा टेक्स्ट इसमें ऐड कर रही हूँ जिसकी वजह से आपको डिफिकल्टी ना हो समझने. And using also the BR tag. Break the line. समझाओ ना. Yes, again what happened? Ma'am, can you explain the format again? Formula. Yes, I will again, but I'm just Yes, taking the more text. That will be not difficult for you. That's why. Okay, so I will show you the output here again. So you can see that section A, section B, section C, both are comes down just because I am using the BR tag here. For example, what is the use of the internal link? वो आपको सारे टेक्स्ट वहीं पे दिखाएगा. अगर आप फाइल यूज कर रहे हैं तो सब कुछ आपको वहां इंटरनली ही डिस्प्ले होगा आपके ही वेब पेज में, राइट. बट whenever you click on the sections, it will be directly goes to the section. वो उसी सेक्शन पे जाके आपको डिस्प्ले करेगा. ये रहा आपका सेक्शन ए. फॉर एग्जाम्पल यू आर क्लिकिंग, यहाँ पे आप देख सकते हो सेक्शन ए, सेक्शन बी. आई एम क्लिकिंग ऑन द सेक्शन सी. जैसे ही मैंने सेक्शन सी पे क्लिक करूंगी तो वो नीचे जाएगा और सेक्शन सी जो होगा वो डायरेक्ट आपको डिस्प्ले करेगा. So this is the use of the internal hyperlinks. Which link you have clicked, it will be comes at the top of the web page. वो directly web page के top में आ जाएगा और आपको दिखाएगा कि ये section रहा जिसपे आपने click किया. Again, section A by default यहाँ पे आप देख सकते हो. Section B, whenever click on the section B, the section B goes to the top. Whenever you click on the section C, you can see the section C here. Again, section B पे क्लिक करेंगे तो section B top of the web page आ जाएगा. Yes, what happened? Who raised their hand? Ma'am, can you take back to the HTML code because ma'am my battery is low, so I want to take the screenshot for practical. Wait a moment. I will share this file in the WhatsApp group. Just because we are not taking a coding, there will be a lots of text I included. आपको ये टेक्स्ट देखने की जरूरत नहीं है. आप ये टेक्स्ट मत देखो कि कितना ज्यादा लिखा है. जस्ट कॉपी इट फ्रॉम द अदर वेबसाइट फॉर योर प्रैक्टिकल. जब आप अपना वेब पेज बनाओ तब इसको आप अपने आप लिखना. For example, what happened when I click on the section A? The section A will be comes to the top. When I click on the section B, the section B will be come to the top of the web page. Whenever I click on the section C, it will be show the section C. Just because that will be an end of the web page, we cannot see the section C on the top. So again, I am show you the code. Ma'am, on top of the website. Ma'am, can you explain again format? Sections. Ashi, I cannot hear you.
What happened, Ashik? You say something, but I cannot hear you clearly. Can you repeat it again? Ma'am, message. Yes, we cannot see the section C on the top just because we end the document at that time. वहाँ पे हमारे वेब पेज का एंड हो जाता है. For example, if you are adding other section, then you can see the section C at the top. उसके बाद हमारा वो डॉक्यूमेंट ही नहीं है तो वो एंड ऑफ द वेब पेज दिखा रहा है आपको सेक्शन सी, बट वो वहां तक तो ले जा रहा है. अगर आप टॉप पे हो तो वो तो सेक्शन सी तक आपको ले ही जाएगा. But here we are ending the document, that's why you cannot see the section C on the top. Means मैं मैम तो जो भी लास्ट होगा सेक्शन वो कभी टॉप पे नहीं आएगा. नहीं, वो वहां पे ही रहेगा just because it's the end of the document. वो end है वेब पेज का, इसकी वजह से वो टॉप पे नहीं आएगा. Yes, Yashvi, you want to ask something? मैम आपकी आवाज ठीक से नहीं है. मैम आप वो फॉर्मेट फिर से एक्सप्लेन करो ना. Which format? This format? This format? Yes. Simply हम external hyperlink में इतना ही लिखते हैं href, then we are write down the link. अगर आपको कोई HTML फाइल इंक्लूड करनी हो, कोई वर्ड फाइल इंक्लूड करनी हो, कोई इमेज इंक्लूड करनी हो, तो आप यहाँ पे डायरेक्टली उसका पाथ लिखते हो और यहाँ पे आप टेक्स्ट लिखते हो जो आपके वेब पेज में डिस्प्ले होगा. But in the internal hyperlink, you have to write down the name of the section that will be in your web page. जो आपके वेब पेज में ही होगा वही hyperlink आपको यहाँ पे लिखना है. It's not need that you have to write down only the section A. You can write down, for example, I'm write down the Microsoft. Then you have to change the name of the section, and then here you can write down the Microsoft. Sorry, here. Spelling will be, you have to check. आपको spelling check करना पड़ेगा. If you are not checking the spelling, then it will be difficulty for you. I'm refresh that, and you can see the section A. Whenever you click on that, it will be here. But name will be changed. दोनों का section एक होना चाहिए. यहाँ पे अगर आप change करोगे Microsoft, तो वो उसी तरह से display होगा. मैंने यहाँ पे चेंज किया बट यहाँ पे नहीं किया था. You can see the change also that it will be a Microsoft. So it will be here. Yes, Rashi. Ma'am, why we have write name Microsoft? Just because it's a name. You can take your own name. अगर आपको यहाँ पे अपना name लिखना हो तो आप लिख सकते हो. It's not compulsory that you have to write down the Microsoft or section. फिर ये लिंक होगी ना मैम माइक्रोसॉफ्ट. क्या हुआ? वापस से रिपीट करो. माइक्रोसॉफ्ट विल बी लिंक. No, it's not a link. It's a name only. For this, it will be a link. This will be a link for this. This will be a link for this. Okay, first is the link for this second. अगर आपको ये टेक्स्ट डिस्प्ले करवाना हो, टॉप पे लाना हो, तो उसके लिए ये लिंक रहेगी. ये आप यहाँ इंटरनली क्या नेम लिख रहे हो, that will be not matter. वो नहीं डिस्प्ले होगा आपके आउटपुट में. यही यहाँ पे आप क्या टेक्स्ट लिखते हो, that will be appear on your web page. यहाँ पे आप जो भी टेक्स्ट लिखोगे वही आपके वेब पेज में डिस्प्ले होगा. That will be a network issue. You have to be patient. Ma'am, can you go to the last code of this page? Yes. It's the same like A. This is the second part. That will be a third part, section C, and here we are ending the document. And just take you have to take, no need to take the screenshot. I will be share the whole file to you. You can open this with your Notepad++. Even you can open this with your browser also. So anything else you want to ask about the internal hyperlinks? That will be maybe very confusing for you, I think.
Yes, ma'am. Yes, ma'am. If you understood what is the external hyperlink, that will be quite easy for you to understood the internal Ma'am, hyperlinks. external is easy. Yeah, external is very easy just because we have to write down only a one sentence for that. And here we have to write down lots of the things to show the proper output. अगर आप सिंपल एक लाइन पे दिखते तो वो डिस्प्ले तो होता, लेकिन वो आपको समझ में नहीं आता कि क्या हो रहा है, इसलिए मैंने थोड़ा ज्यादा टेक्स्ट दिया ताकि आपको इजीली समझ में आए। तो मैं भी यही चाहूंगी कि आप ज्यादा टेक्स्ट ले जिसकी वजह से आपको इजीली समझ में आए कि हाँ यहाँ मेरा प्रैक्टिकल हो रहा है। I know that it's a very confusing. Anything you want to ask? Ma'am, can you scroll up? Ma'am, I have a question, ma'am. Yes. मैम अगर हम थोड़ा सा टेक्स्ट लिखेंगे मैम तो फिर ये स्क्रॉल डाउन स्क्रॉल अप तो होगा ही नहीं ना मैम। यही तो बोल रही हूँ, अगर हमने सिंपली एक लाइन लिख के दिखाया तो स्क्रॉल अप डाउन नहीं होगा, जिसकी वजह से आपको पता ही नहीं चलेगा कि क्या हो रहा है। आपको कुछ पता ही नहीं चलेगा कि मैंने क्या लिखा, मैंने इस पे क्लिक किया लेकिन ये अप डाउन तो हुआ ही नहीं, ना ही उसने मुझे सेक्शन पर्टिकुलर दिखाया। तो फॉर द इंटरनल हाइपरलिंक और इज ओनली फॉर द लार्जर नंबर ऑफ द टेक्स्ट। अगर आप ज्यादा टेक्स्ट का यूज कर रहे हैं, बहुत ज्यादा टेक्स्ट है और आपको मिल नहीं रहा, तो इसके लिए इंटरनल हाइपरलिंक्स यूज होती है। बट इन द वेब पेजेस यू कैन सी दैट मोस्ट ऑफ आर यूजिंग द एक्सटर्नल हाइपरलिंक्स that will be easy and understandable by the users. Internal is very confusing thing that if you are using the more text then you can easily understood that. Please mute yourself. I will be scrolled it. I will share the whole file to you. No need to take the screenshot or the snap. Okay, ma'am. So anybody have a query now?